Hey everyone, welcome to Clat Point. Today we have Varna और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग उनको आज यहाँ पे बुला के, क्योंकि शी वाज आवर स्टूडेंट. वर्ना का एनएलसेट के इस बार पेपर में 104 मार्क्स आया है एंड शी इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू एनएलएसयू. अभी प्रोविजनली एडमिटेड लिखा हुआ है, बट विद टाइम वहाँ पे वो एडमिशन में चेंज हो जाएगा. तो वर्ना, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस. कैसा Thank you लग रहा very है much. आपको? कैसा लग रहा है आपको? I'm एक्सपेक्टेड extremely था? happy, एक्सपेक्टेड? extremely grateful. आपको Yeah, एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा? I was manifesting it. I was hoping that it would happen. I didn't think about a situation where it wouldn't happen. I didn't let myself think about that. So yeah. पेपर के बाद शायद आपसे बात हुई थी मेरी, तो यू वर लाइक कि सर नहीं हुआ तो मैं इस बार फिर दूंगी. कहीं Yeah, एडमिशन I नहीं. was very adamant about this. So yeah. ठीक है. तो वरना सबसे पहले तो मुझे आपसे बस यही जानना था वो कैसा था. तो मुझे बताइए, व्हेन हैव यू डिसाइडेड कि यार एनएलसेट का पेपर देना है, क्योंकि अभी तो नया ही आया था. और कैसे आपको लगा कि नहीं, एनएलएस से ही जाके लॉ करना है मुझे? और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, जैसे मुझे पता है लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, कि अभी आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ था, थोड़ा उसके बारे में भी. Sure. So I did a triple major in economics, political science, and sociology from Christ University, and I graduated in 2022. So when I was in my second year of college, I was sure of two things. Firstly, that I wanted to do law, and secondly, that I needed a break. I really wanted a break after my degree. Which is why, although NLSAT was there in 2022, I didn't write the paper back then. This was my first attempt. Um, but back then, NLSAT hadn't been announced, and I was in a bit of a dilemma because I was wondering whether I needed to do a 5-year BSW LLB or something from GNLU or do it from some other private university, a 3-year course. But then I feel like this announcement came at the right time for me and it was perfect. That itself felt like such a good sign. So yeah, that's when my second year of college, that's when I decided that I wanted to do NLSAT, and I took a break here and then wrote it in 2023. ठीक है. वरना तो हम स्ट्रैटेजी पे भी वरना के आएंगे, लेकिन सबसे पहली चीज तो एज एन एस्पिरेंट आपने ये चीज फील करी होगी, और स्टूडेंट्स जो अभी ये देखेंगे उनको भी फील होता होगा कि बहुत अप्स एंड डाउन होता है. कभी फील होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, कभी किसी दिन टीचर्स ने कुछ बोल दिया है, मॉक में अच्छा नहीं हुआ. तो वो कैसे मैनेज किया आपने? जैसे अब क्योंकि आपका तो रहा है, मैं काफी कन्वर्सेशंस भी हमारी हुई हुई हैं, तो कैसे वो मैनेज किया और उसको कैसे इन दी एंड रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं होने दिया? So I think on the day of the exam and one day before that, I had made up my mind that I was going to stay calm during the paper because this is an exam that requires you to read in a very detailed manner. A small mistake can cost you a lot, right? Can cost a misunderstanding, can cause a misunderstanding. So, but in terms of the entire process of prep, definitely there are highs and lows. I think throughout this process, what helped me was having a solid support system in terms of mentors, in terms of other students who were preparing, with whom I'd formed a study group. I think study groups don't work for everybody, but they genuinely did help me a lot because काव्या के whatever. साथ था आपका, है ना? Yes, absolutely. Kavya, Rishita, Ashutosh, all of those people. So it really helped me because we felt like we were in the same boat and we could, share with each other and discuss answers and all that. So that really helped me. I think even in terms of family, friends, having a solid support system is what helped me through this. ठीक है. वेरी मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और अभी करना चाहता हूँ इनपुट, कि हम लोग भी जैसे जब मॉक टेस्ट या कुछ भी लेते थे तो वी वर लाइक कि हाँ, टॉप 6-7 में जो स्टूडेंट्स थे उसमें वरना भी एक था. बट वरना के साथ ऐसा था कि मॉक्स में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा कभी स्कोर किया या समथिंग ऐसा, बट एंड में उन्होंने बहुत अच्छा किया. और ऐसे बहुत बार स्टूडेंट्स का होता है कि मॉक्स में दे डू गुड और एंड में नहीं करते हैं. तो मेरा ये इसलिए अभी यहाँ बोलना है कि डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि आप अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं आ रहा है या आ रहा है. विथ टाइम जब आपको पेपर देना होगा तब तक यू कैन प्रिपेयर वेल, और फिर तो आप देख ही रहे हैं. वरना इज एन एग्जाम्पल, आप बहुत सारे लोगों को आसपास देखते होंगे, तो ये है. तो वरना भी सीधे आते हैं पॉइंट पे, स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट ए, जो आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहें कि क्या रहा आपका, और कोई बुक्स अगर आपने रेफर करी हो तो. Okay, so for part A, I think primarily there's a lot of weightage that's been given to reading comprehension and general awareness, right? So for part A, I think it is
a must, like it is mandatory for you to make it a habit to read the newspaper every single day. I think more than monthly compendiums, that's what helped me, reading the newspaper every single day, and then referring to other sources, editorials, opinion pieces. And I think even if you look at the kind of passages that have been, asked in this particular paper in 2023, they had excerpts from books. They had all sorts of passages. So it's not only about current affairs. I think if you just get into the habit of reading, that'll do you good. So that's for reading comprehension, and also reading speed is extremely important. And for GK, I did use monthly compendiums, but I think having a general awareness of what's happening and following up on significant issues is more important. And Arihant is a yearly compendium that I refer to. So yeah, these are the sources that I used. ठीक है. What about part B, वरना कैसे आपने किया? क्योंकि part B इज डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, एंड क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है, अभी तो 2 ही साल हुए हैं पेपर को, और फिर उसमें भी उन्होंने चेंज कर दिया था इस साल अचानक से कि 10 मार्क्स का हो जाएगा. पहले छोटा लिखना होता था, अभी आंसर का लिमिट भी बढ़ा दिया था. तो हाउ यू मैनेज इट, और क्या आपका रहा पहले लीगल का फिर ऐसे का, दोनों का बताइएगा. So I think after they made it an analytical essay and not a current affairs essay, I think it's pretty much the same or a similar strategy that you use for both the sections in part B. I think the main issue, the main thing that you need to focus on in part B is reasoning, right? And by reasoning, I'm not talking about solving critical reasoning questions like you would in an exam like Clat, for example, but just your ability to justify what you're saying, to pick a stance and justify that stance, to go a little beyond making statements and sort of mechanizing those statements into arguments. So I think practice is all you need. I think referring to multiple sources for mocks, reaching out to as many institutes as possible and getting mocks, if not coaching from them, getting different mocks is that's something that really helped me out. And yeah, I always timed myself when I practiced. I didn't give myself any leeway because I was doing it on my own at home. I always stuck to time and practiced like that. And I had a major issue with my handwriting also, as you may probably know. So that's something I think other students. पर इस पे बात भी हुई थी कि वरना राइटिंग बहुत बेकार है आपकी, ऐसे ऐसा बात हुआ था. So these are minute things that we may think are not so important because it's not mentioned in the syllabus that students should have a good handwriting, but it plays an important role. ऐसे कौन सा अटेम्प्ट किया था वरना आपने, चैट जीपीटी वाला या लीगल वाला? The one on criminal law being an effective tool to address child marriage. That was a very relevant topic that was going on. But I think I didn't really give any facts or statistics. Rather, I just focused on the issue and argued conceptually. So I think that will also do for part B, if you practice taking different issues and arguing them conceptually. So yeah. And legal answer writing में मतलब there is saying वो from NLSAT कि भाई legal वो नहीं expect कर रहे हैं something ऐसा. But what do you think कि क्या basic legal knowledge की थोड़ी बहुत need है answers के लिए, प्लस क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए लीगल के आंसर्स लिखने में, मतलब उसमें कितना लीगल यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने किया है आपके पेपर के अंदर? Yeah, so I think after the notification that came from the administration themselves, a lot of students even then were under the misconception that you had to quote acts and sections from acts, and you really don't have to do that. I think it's solely about reasoning. If you look at some of the questions that they asked us, it's you just have to argue and reason out things that may seem intuitive to you. You have to go beyond that, right? Like we think that some things are good or some things are bad, but we have to go a step beyond that and argue why something is good or why something is bad. So they're really looking for good arguments and good reasoning and not just like plain statements. So I think that's the approach that I used instead of like mugging up bare acts that surprisingly some other students were doing as well. पर इसमें देखिए यही बात है, जैसे वर्णा ने बोला ना, तो ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा ना क्वालिटी पे फोकस करना जरूरी है, एंड स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक जब भी हम लोग भी क्लासेस लेते थे तो उसी क्लास में वर्णा भी थी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और लोगों ने मेहनत नहीं किया या और बच्चों ने नहीं किया, बट ये स्पेसिफिकली बोला जाता है कि यार बेयर एक्ट सेक्शंस नहीं करना है, ये नहीं करना है. उसके बावजूद भी अगर बहुत सारा चीजें दिमाग में चलता है, क्योंकि इसमें मुझे प्रॉब्लम लगता है वरना ये कि एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स का जब लोग तैयारी करते हैं ना, तब दे गेट कंफ्यूज,
क्योंकि वो True. DU LLB का उस समय पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, तब वहां पे बेयर एक्ट का यूज होता था। तो फिर इंसान जो है ना वो बहुत कंफ्यूज था। जैसे लाइक वर्ना के केस में वर्क किया, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग बैकअप कॉलेज ना रखें, शी वॉज लाइक कि मुझे एनालिस्ट में ही जाना है, बट एक समय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यार इस एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना है, ये हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरे एग्जाम्स के लिए कर लूंगी। क्योंकि फिर वहां पे कंफ्यूजन में ना, इन दी एंड वी आर ह्यूमन, तो वो एक साथ आंसर मिक्सअप होने के पूरे चांसेस हैं। True. Yeah, absolutely. ठीक है। तो वरना के लिए तो प्लान बी वाली कोई बात ही नहीं, उनको एनालिस्ट मिल गया है, इंडिया का बेस्ट लॉ कॉलेज है ना। तो वरना मैं आपके प्रिपरेशन के उसमें कुछ क्विज टाइप के क्वेश्चंस पूछता हूँ, दो में से एक चुनना, ठीक है। द हिंदू या Sure. इंडियन एक्सप्रेस? I would say the Hindu for general news and the Indian Express for editorials. ठीक है। आंसर राइटिंग और रीडिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स बस? Answer writing. मतलब Practice is करो, important. प्रैक्टिस करो, है ना, ठीक है। कोचिंग और सेल्फ प्रेप? I think for this exam, self-prep is enough, but in terms of mocks and mentorship and feedback, which is really important, coachings can give you that. CR और RC आपको ज्यादा बेटर क्या लगता था? CR. ओके। सोशल मीडिया आपने यूज किया कि नहीं किया, सोशल मीडिया और नॉट? यूज As करना in to चाहिए? prepare for this exam, or हाँ नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इस रेफरेंस टू द एग्जाम कि आपको करना है कि नहीं करना है ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड? I think anything is okay in moderation. I didn't like deactivate my account completely or anything like that. I think it'll help you actually to stay connected with your friends. So it's fine as long as it's in moderation. ठीक है। तो वरना से मैंने जितनी भी ये चीजें हम निकाल सकते थे उनके प्रिपरेशन का, वो हमने कोशिश करा। पर वरना कुछ आपके इनपुट्स जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट को देना चाहो इस एग्जाम के लिए, डायरेक्टली आप उनसे जो भी आपके कुछ इनपुट्स हो, जो आपको लगा हो कि आपके प्रिपरेशन में आपसे मिस्टेक्स हुई हो, या फिर इस पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो प्लीज। So there are a lot of takeaways that I've gained at the end of this 1 year that I'd like to share with you, some of them at least. I think, firstly, what I've realized is how you think of this exam can really impact your approach towards this exam and ultimately your performance. So, although there is a lot of competition and it's important to acknowledge that this is something difficult, don't keep focusing on the fact that this is difficult and that you will not get in. It is important to believe that you can do this, to think of this as something that's attainable. Because, see, if you run a race thinking that you're not going to get it, you've already lost even before the race has begun, right? So I think it's really important not to stand in your own way and to prepare with the intention of getting in. And also, I think don't get confused with too many current affairs sources. If you're doing compendiums or whatever, that's something that happened to me. Pick a source. At best, I'd say one monthly compendium, one yearly compendium. And yeah, also reach out to people. People prepare in isolation. Reach out to seniors who are at NLS, to mentors at your coaching institutes, and other people who are preparing. It will really help. So yeah. मतलब आपस में सब लोग मिलके जितना भी टेक अवेज ले सकते हैं उस तरीके से करें, क्योंकि बहुत बार ये होता है आप कुछ गलत करते रहते हो और आपको अपने में लगता है कि आई एम करेक्ट, बट बाद में पता पड़ता है नहीं यार हमसे तो ये गलती हुआ है। तो वो वाली बात True. है। वरना रोल ऑफ क्लैट पॉइंट इन योर जर्नी? So I joined Clat Point 3 months before the exam, right? In terms of the materials, the mocks, and I think what the best thing that Clat Point has done for me is introduce me to like everybody else who was preparing, to be honest, along with mentors who had an idea about this exam, right? And who could guide me. Because until then, I was mostly preparing in isolation. But that's when I got to know that there are all of these other sources and different ways of preparing. And so, yeah, I think that the quality of the materials is really good. And I really like that the classes were extremely interactive and we discussed different points of view in all of the classes. And so, yeah, I'd say that it's played an important role. वरना आपके जो फ्रेंड्स थे जो आपने ग्रुप बनाया था, तो उनमें से बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा, और अभी इस रिजल्ट के बाद मैं अभी आपका वीडियो डालूंगा तो अभी कल ही निकला है रिजल्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना डिसहार्टेंड हैं, अभी इनका नहीं हुआ है। तो उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें, मतलब कि आपको क्या लगता है कि मतलब उनको इतना ज्यादा सोचना चाहिए कि इट्स एन एग्जाम, इतने पे रह के रहें, या फिर मतलब कैसे वो कोप अप करें इससे?
I think it wouldn't make sense for me to say that it's just an exam, it's not a big deal, and invalidate people like that. I'm sure that this exam was a big deal to me. And so I'm sure it is a big deal, and it has been a big Agreed. deal to all of those people, right? So I think if you're upset about it, you have every right to be. Please cry about it, be upset about it, but don't let it completely crumble you. And all, especially my friends, all of those people, I truly believe that they have the ability to do amazingly wherever they go and whatever they choose to do ahead. So I think hold on to that. ठीक है, तो थैंक यू सो मच वर्ना, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मतलब वी आर वेरी प्राउड फ्रॉम ऑल द क्लैट पॉइंट टीचर्स, एवरीवन। सब अब बोल रहे थे कि क्योंकि आप, क्योंकि जैसे देर आर सम स्टूडेंट जिनको टीचर्स जानते हैं, वरना उनमें से एक थी क्योंकि बहुत इंटरेक्ट करना, बहुत क्वेश्चंस पूछना, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी अबाउट हर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ना, एंड आई होप आप आगे ऐसे ही वंडर्स करते रहें, एंड कीप इन टच, एंड आई होप आप Yes. आगे और अच्छा करें। ठीक है, Thank you so much. लास्ट कोई लाइन अगर अब एस्पिरेंट्स के लिए, कोई मोटिवेशन कोट, समथिंग, कुछ भी? Very cliche, but all the best. You can do it. ठीक है, और वरना को वहां पे एज ए सीनियर आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बात कर लीजिएगा, है ना, कि मैम आपको देखा हुआ था। तो ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वरना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।